I, Squadron Leader Hassan Jalal, and I, Squadron Leader Khadija Awan, welcome you all to this momentous occasion that marks yet another milestone in the glorious history of Pakistan Air Force. Ladies and gentlemen, the chief guest, Mr. Imran Khan, Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. जनाब, एहसासी कोड अपने अलम निशान के साथ पैमाना तैयार।
Resource good. Jump. Resource good. One. Resource good. No stop. Column में चलेंगे.
Ladies and gentlemen, emerging from the horizon and approaching perpendicular to the venue, coloring the sacred skies of motherland, the Sherdils. This formation is being led by Wing Commander Yasir, Officer Commanding Advanced Jet Training Squadron. Ladies and gentlemen, the formation is spreading national flag colors of green and white in the skies, depicting national pride and glorious future of the great Pakistani nation. Approaching from the left of the venue, the Mirage aircraft. Ladies and gentlemen, after the single ship high-speed pass, now approaching the venue from the left is the formation of legendary Deltas, the Mirage aircraft. Today this formation is being led by Wing Commander Talal. This formation, ladies and gentlemen, will present a linear brake maneuver in multiple directions. Now, from the left again, the next formation running in is of extremely potent F-16 Fighting Falcons from number 9 Squadron. From the left again, approaching the venue is a formation of most anticipated, much awaited J-10C Dragons. And here comes, ladies and gentlemen, the Dragon from the east. I present to you the J-10C. This formation will now feed into the landing pattern and land in front of you. After landing, all aircraft will taxi in and park at the main tarmac, right in front of you in a synchronized manner. Ladies and gentlemen, if you look towards left, you can see that the landing has already begun. Realizing the emerging geostrategic environment and Pakistan Airforce's consequent role, the government of Pakistan was forthcoming in its support for acquisition of this weapon system despite fiscal challenges, especially in COVID-19 situation. The support extended by the JS headquarters and sister services in this regard speaks volumes about the synergy and clarity of operational requirements that exist at the highest levels. Tremendous cooperation by the Chinese government as well as PLA made it possible for us to sign the contract in minimum possible time. The contract for the acquisition of J-10C weapon system was signed with Chinese OEM in June 2021, which included provision of the jets and associated weaponry along with initial training of the air and ground crew. Delivery of the same in only 8 months is unprecedented when it comes to acquisitions of such high-end technology and firepower. J-10C is a symbol of brotherhood, unity, and trust. It also depicts hard work, devotion, dedication, and perseverance. मुझे तू आज़मा जहान से जहां मेरी उड़ान को नहीं कोई गुमा निगाह की जुनून है बेपनाह है सर की ये पर्वत आसमां मेरे विशाल में है इश्क दाया ले आए जोश दे सदा
तरह मैं राही हवाओं का बादल की तरह खाई है कसम लगा दूंगा दम ये दुश्मन को है पता मेरे हिसार में है इश्क दायरा मेरा ये जोश दे सदा मैं If you look towards the leftmost aircraft, you can witness it's fully loaded, giving a loud and clear message about the operational preparedness of Pakistan Air Force. Ladies and gentlemen, the proud number 15 squadron will now present to the nation first batch of J-10C Dragon weapon system with a pledge to uphold the legacy of Pakistan Air Force at all costs. Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, I present to the nation the first formation of J-10C aircraft. Assalamu alaikum, sir. Ladies and gentlemen, recitation from the Holy Quran followed by recitation of the Rood Sharif by Chief Warrant Officer Qari Muhammad Ibrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
May I now request the Honorable Air Chief Marshal Zahir Ahmad Babar Sidhu, Nishane-e-Imtiaz Military, Chief of the Air Staff, Pakistan Air Force, to kindly take the podium for his address. Ladies and gentlemen, we live in a challenging time in the wake of evolving global and regional environment. The rapidly changing geostrategic environment has profound impact on the region as well as Pakistan. In addition, pace of changing technology in contemporary world continuously to alter the character of war at fast pace. Advancement in space, network, electronic warfare, cyberspace, nanotechnology, and miniaturization coupled with artificial intelligence have profoundly affected the traditional concept of national security and defense. In order to provide safe and secure environment to our nation against all threat, the armed forces of Pakistan continue to synergize their effort, bridging capability gap through timely induction programs. Considering modern parameters of warfare, induction of J-10C aircraft into Pakistan arsenal today is a result of one such combined effort, which merit profound appreciation at all levels. Your Excellency, the Prime Minister, I must acknowledge outstanding support that the PF received from the government of Pakistan under your able leadership despite challenges and stress of COVID pandemic. This milestone could not have been possible without your kind patronage in providing the fiscal space to equip Pakistan Air Force with this weapon system within a short span of 8 months. I would like to make a special mention of the all-out support by the Chief of Army Staff. I may also mention that all ranks and files of Pakistan Air Force admire his vision and personal involvement to see the manifestation of this project. I am also extremely grateful for his support in other PF projects of national importance. Ladies and gentlemen, this ceremony is also a testimony to the strong partnership between two brothers, Pakistan and China. Our commitment to work together in multiple domains is undoubtedly significant to ensure peace and stability in the region. I am extremely grateful to the Chinese political and military leadership as well as His Excellency Chinese Ambassador and his team in Pakistan for their assistance and cooperation. Effort by the management of CATEC and their staff is also worth praising. Lastly, I commend the dedication and the professionalism of my team for successful induction of this weapon system in a record time despite several challenges. Ladies and gentlemen, induction ceremony of J-10C aircraft has many significant aspects to it. Today, after a gap of almost 4 decades, Pakistan Air Force is inducting next generation combat system with all this concept, state-of-the-art technology and weaponry. Last such event was in 1982 when F-16 aircraft joined the Pakistan fleet. Number 15 Squadron, also known as Cobras, is the first Pakistan Air Force squadron to be equipped with J-10C Dragons. Ladies and gentlemen, on a personal note, number 15 Squadron was my first unit where I began my journey as a fighter pilot. Later, I had the privilege to command this elite squadron also. Number 15 Squadron has a glorious history of service to Pakistan, both during war and in peace. The squadron has the distinction of PF first kill on 10th April 1959 when Flight Lieutenant Muhammad Yunus shot down an Indian Air Force Canberra over Rawalpindi. Later, the unit actively participated in both 1965 and 75 wars. More recently, the squadron provided the main offensive effort during Operation Swift Retard on 27th February 2019 with desired effect. Re-equipment of Cobras with J-10C is certainly a well-earned honor for this battle-tested and decorated PF squadron. At the same time, it has also placed a huge responsibility on the leadership
and personnel of this unit to operationalize the capability as quickly as possible. Ladies and gentlemen, J-10C has a fully integrated weapons, avionics, and EW suite that make it a potent combat system under the contemporary environment of non-contact warfare. The aircraft is configured with world's top-class weapon, including PL-15 air-to-air missile and variety of stand-up position munitions, ISA radars, net-centric and sensor fusion capabilities enable it to detect, engage, and destroy targets at long range, both in air-to-air as well as air-to-surface domain. With multi-domain capability, J-10C aircraft would indeed revolutionize Pakistan Air Force operational thought. It will enhance net-centric and integrated employment of electronic warfare while ensuring retention of first shot capability. Undoubtedly, PAF has always been fully motivated, trained, and skilled to deter any aggression and misadventure, regardless of the quantum of the threat. However, induction of this weapon system will further enhance Pakistan Air Force capability to effectively deal with the requirement of contemporary aerial warfare. I am confident the pilot and the technician of number 15 multi-role squadron shall ensure smooth and swift induction of this capability with professionalism and commitment, upholding Pakistan Air Force legacy, inshallah. Ladies and gentlemen, alhamdulillah, under all challenging situations, Pakistan Air Force has proved equal to the task. PF has always fought outnumbered and lived up to the expectation of our great nation. We have never attempted to match numbers nor wish to be in any arm race. However, we continue to enhance our capability to ensure national security and regional stability. Ladies and gentlemen, to meet contemporary threats, our focus is on strategic restructuring. In this regard, Pakistan Air Force is pursuing a well-crafted developmental strategy, smart induction programs, putting hands on niche and disruptive technologies, human resource development with modern parameters from our nursery to professional military education, high quality combat training to maintain highest level of readiness across all domains, and focused on major R&D to promote government indigenization effort for economic prosperity of Pakistan. Ladies and gentlemen, I would like to share that the aerospace industry is globally treated as strategic industry based on technological, fiscal, social, and national security dividends. It is projected at more than $10 trillion for next 20 years. Moreover, cyber and IT industry also fall in line with aerospace industry owing to its tremendous growth and pivotal role. In this regard, Government of Pakistan has undertaken several key initiatives, including formulation of Special Technology Zone Authority and National Aviation Policy to harness potential of aerospace, cyber, and IT industry. In line with the vision of His Excellency, the Prime Minister of Pakistan, PF Alhamdulillah, has launched a flagship project called National Aerospace Science and Technology Park, commonly known as NASTAP. The NASTAP project aimed to establish aerospace cluster at Kamra as well as Technopark in major cities and reputed university across Pakistan. The project is well poised to harness niche technologies including robotics, UAVs, radars, software-defined radios, as well as futuristic capability in smart material, 3D printing, sensor fusion, supercomputing, artificial intelligence, to name a few. Ladies and gentlemen, I would like to acknowledge the support of Government of Pakistan in establishing this premier institution of aerospace and academia linkages. As a project of strategic national importance for which I express my extreme gratitude. PF will inshallah continue to bring good news for the nation in near future in this regard. Ladies and gentlemen, in the end, I congratulate the whole nation on the induction of J-10C weapon system for Pakistan today. I once again sincerely thank His Excellency the Prime Minister of Pakistan for his patronage and presence here today. I am also extremely grateful to all distinguished guests
for sparing their valuable time and gracing this historic event. May Allah bless our collective effort to fully contribute towards prosperity of people and progress of great nation. Ameen. Pakistan Airforce, Zindabad, Pakistan, Paindabad. मैं सबसे पहले तो आज अपनी कौम को मुबारक देना चाहता हूँ कि तकरीबन 40 साल के बाद, 40 साल पहले F-16s हमें अभी भी याद है कि जब इंडक्ट हुए थे हमारी एयरफोर्स में, तो पाकिस्तान में एक बड़ी खुशी की लहर भागी कि हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं लेटेस्ट एरोप्लेन से एयरफोर्स के अंदर। और उसके बाद अब ये जो आज हमने डिस्प्ले देखी है J-10C की, ये हमारी कौम को इसलिए हम मुबारक देते हैं कि अनफॉर्चुनेटली एक इम्बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है हमारे बर्रे सगीर में, और उस इम्बैलेंस, सिक्योरिटी इम्बैलेंस को एड्रेस करने के लिए ये एक आज अल्लाह का करम है कि ये एक बहुत बड़ी एडिशन हुई है हमारी डिफेंस सिस्टम में। मैं इसके लिए चाइना का ख़ास तौर पे शुक्रगुज़ार हूँ। अपनी कौम की तरफ से चाइना का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पूरी रिकॉर्ड टाइम, गालिबन 8 महीने के अंदर ये हमें जेट्स प्रोवाइड किए हैं, जबकि इसका काफ़ी साल लगते हैं। और दूसरा, मैं एयरचीफ आपको जो भी आपने बातें की हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस तरह की मॉडर्निस्ट थिंकिंग हमारी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर आ गई है, क्योंकि जो आपने टेक्नोलॉजीज़ और आने वाली जो फ्यूचर वॉरफेयर है उसके ऊपर तो अब टेक्नोलॉजी के ऊपर ख़ास तौर पे ज़ोर दिया जाएगा। तो जो भी मेरी आपसे मुलाकात हुई कि आपसे हमने डिस्कस किया कि हम अब कैसे अपना मुल्क का रुख मोड़ सकते हैं इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करने के लिए, जिसके लिए हमने टेक्नोलॉजी जोन सेटअप किया। हमने आपके साथ मिलके एक इंशाल्लाह जो एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं जिसमें सारी मॉडल टेक्नोलॉजीज़ होंगी। और मैं ये भी समझता हूँ कि हमारा मुल्क बड़ा खुशकिस्मत है कि हर किस्म का प्रोफेशन, हर फील्ड के अंदर क्वालिटी प्रोफेशनल्स पाकिस्तानीज़ आज अवेलेबल हैं, लेकिन अभी मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। तो जैसे जैसे पाकिस्तान आगे बढ़ता जा रहा है, स्टेबल होता जा रहा है, इकोनॉमिकली साउंड होता जा रहा है, हमारा डायरेक्शन सीधा होता जा रहा है, हम अपने सिस्टम्स ठीक कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये भी सारा टैलेंट हमें अवेलेबल होगा। मेरा ये ईमान है कि मुल्क में हम हर किस्म का इंटरनेशनल क्वालिटी का इदारा बना सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे पास ये अवेलेबिलिटी है बाहर एक पूल ऑफ प्रोफेशनल्स की, कि जब भी हम इंशाल्लाह इस मुल्क में जिस तरह ये आगे बढ़ेगा हम उनको वापस ला सकते हैं। मुझे पाकिस्तानी कौम की तरफ से आज अपनी आर्म्ड फोर्सेस को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें बड़ा कॉन्फिडेंस है कि हमारे पास ऐसी आर्म्ड फोर्सेस हैं जो हमारे मुल्क का दिफा कर सकती है। हमें ये कॉन्फिडेंस है कि कोई भी पाकिस्तान की तरफ अगर देखेगा अग्रेशन के लिए, तो उनको पता होगा कि उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। जो पुलवामा में के बाद जब बालाकोट पे अटैक हुआ, तो जो पाकिस्तान का जिस तरह का रिस्पांस था, एक सारी दुनिया में पैगाम गया कि हमारे में पूरी कैपेबिलिटी अपनी हिफाजत करने के लिए। आपको मैं ये एहसास आज दिलवाना चाहता हूँ कि असल में आपकी आर्म्ड फोर्सेस की ताकत तब बनती है जब सारी कौम उनके पीछे खड़ी हो। आर्म्ड फोर्सेस उस मुल्क की तकड़ी होती हैं जब कौम और आर्म्ड फोर्सेस एक ही तरह सोच रहे हो। तो आज हमारी कौम, मैं ये अपनी कौम की तरफ से कहना चाहता हूँ कि ये जो बड़ी कुर्बानियाँ दे के हमने ये पिछले
2003-4 के बाद ये जो बड़ा मुश्किल जंग लड़ी है, एक आमने सामने दुश्मन से जंग और होती है, लेकिन जब इस तरह की जो वॉर ऑन टेरर के अंदर चैलेंजेस हमारे सामने आए, ये बहुत मुश्किल जंग होती है। उजड़ गए हम मुल्क। अब देखें इराक़ के अंदर क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ, तो मुल्क उजड़ जाते हैं। लेकिन जिस तरह हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने और पब्लिक ने जिस तरह ये सामना किया, तो ये एक दुनिया के अंदर एक पैगाम गया है कि ये वो मुल्क है जो अपनी हिफाजत कर सकता है। तो मैं आज बड़ी खुशी का इसलिए इजहार करता हूँ कि मुझे अभी जो डिस्प्ले देखी है, मुझे कॉन्फिडेंस और आ गया है कि हम इंशाअल्लाह कोई भी हमारे ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं डाल सकता। पाकिस्तान जब बना था, और मेरी उम्र पाकिस्तान जितनी है तकरीबन, कि एक आज़ाद मुल्क तो सिर्फ आज़ाद रह ही तब सकता है, खुददार रह ही तब सकता है जब वो अपनी वो हिफाजत कर सके। तो मैं आखिर में अपनी गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो आखिर में मैसेज देना चाहता हूँ वो ये, अल्लाह का करम है, हमारी रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई है, हमारे टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं, और जिस रेट पे हमारे टैक्सेस बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ रही हैं, बाहर से रेमिटेंस हमारे पास आ रही है, वेल्थ क्रिएशन हो रही है पाकिस्तान में। जैसे जैसे हमारा पैसा बढ़ेगा, मुल्क की आमदनी बढ़ेगी, तो दो तरफ हमारा पैसा जाएगा। पहली प्रायोरिटी कि अपने मुल्क में गुर्बत कम करनी, अपने निचले तबके पे पैसा खर्च करना, हेल्थ कार्ड जैसा जो कि डेवलप्ड मुल्क के अंदर भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं, हर ख़ानदान को ये जो 10 लाख की इंश्योरेंस देना, और फिर एहसास प्रोग्राम्स के नीचे से लोगों को ऊपर उठाना। और दूसरा, जैसे जैसे हमारे पास वेल्थ क्रिएशन होगी, इंशाल्लाह अपने डिफेंस के ऊपर हम खर्च करेंगे और मजबूत करने के लिए, क्योंकि असल में तो जब एक असल आपकी ताकत यह है कि कोई आपको जंग लड़नी ना पड़े, कि लोगों को ये पता चल जाए कि इनके पास इतनी तैयारी है कि जब अगर वो उनके ऊपर किसी किस्म की एग्रेशन करेंगे तो उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इंशाल्लाह इन दो तरफ हम अपना पूरा अगला जो हमारी बजट की प्रायोरिटीज़ डालेंगे। मैं स्क्वाड्रन 15 को आपको भी आज एक्नॉलेज करता हूँ, क्योंकि जो हमने डिस्प्ले देखी और ये जो आपने रिकॉर्ड टाइम पे ये नए एयरक्राफ्ट्स के ऊपर जो काबू पाया, तो आपको भी मैं आज अप्रिशिएट करता हूँ। May I now request His Excellency, the Prime Minister of Pakistan, Chief of the Air Staff, Services Chiefs and Honorable Ministers to kindly proceed towards the aircraft for inspection. मुझे तू आज़मा जहान से जहां, मेरी उड़ान को नहीं कोई गुमा, निगाह की जुनून है बेपनाह, है सर ये कर्ब गया